from the topic that we have left in the previous video. Last class में हमने types of tissue पढ़ लिया था और हमने epithelial tissue पढ़ लिया था. In the last class, we have learned about the types of tissue and we have also discussed the properties of epithelial tissue. So we are done with the properties of epithelial tissue. In today's class, we're gonna discuss about the types of epithelium. आज की क्लास में आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने वाले हैं. थोड़ी लेंथी जाएगी बट वेरी इंफॉर्मेटिव, राइट? इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट आई कैन कंटिन्यू फर्दर. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं कि मैम एक ऐसा टिश्यू जो दूसरे पे ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू. ग्रेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम. Let's discuss the types of epithelium. We have classified epithelium on the basis of how many layers are present. कितनी लेयर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई कर रखा है. If a single layer is present, we call it as simple epithelium. If more than a layer is present, like more than one layer is present, we call it as compound epithelium. So I hope you have understood the difference between compound and simple epithelium. अगर एक ही layer present है, if a single layer is present, we call it as simple epithelium. If more than one layer is present, we call it as compound epithelium. Simple epithelium को भी हमने फिर further classify किया है. Yes बच्चा, we have further classified it. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. वी हैव क्लासिफाइड द सिंपल एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन वी हैव क्लासिफाइड सिंपल एपिथेलियम. स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, सेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द सेल. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव क्लासिफाइड सिंपल एपिथेलियल सेल्स. Simple epithelial cells can be see bachcha, cells are irregular in shape. Yes, these cells are irregular in shape, wavy irregular. Let's call them as squamous epithelium. हम इसे क्या बोलेंगे? We will call it as squamous epithelium. wavy irregular cells जो दिखाई देते हैं उनको हम squamous बोलते हैं. अगर लेंथ और विड्थ दोनों बराबर है, जस्ट लाइक क्यूब, द लेंथ एंड विड्थ बोथ आर इक्वल, वी कॉल इट एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. हम उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं. एंड इफ लेंथ इज मोर देन द विड्थ, लेंथ से ज्यादा विड्थ है, पिलर जैसा दिखाई दे रहा है, राइट? लेंथ से ज्यादा विड्थ है, हम इसे बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम. We used to call it as columnar epithelium. अगर सेल के ऊपर, किसी भी सेल के ऊपर अगर आपको सीलिया दिखाई दे इस तरह से, we used to call it as ciliated epithelium. और अगर सेल है तो सिंगल सेल लेयर पर प्रिटेंड करे कि आई हैव मोर देन वन लेयर, है तो सिंगल लेयर बट प्रिटेंड करे आई हैव मोर देन वन लेयर, वी कॉल देम एज सूडो स्ट्रेटिफाइड. आई विल शो यू. इस तरह के दिखते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड. प्रिटेंड कर रहे हैं वी आर मल्टीपल लेयर, है सिंगल लेयर, वी कॉल देम एज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. वी यूज्ड टू कॉल देम एज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. We have one more time जहाँ पर कुछ secretion हो, we used to call them as glandular. We have one more time जहाँ पर कुछ secretion हो, we used to call that glandular epithelium. तो हमारे पास टोटल आप काउंट करें सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप के हो गए? स्क्वामस, क्यूबॉइडल, columnar, ciliated, pseudostratified, glandular. I think if you can count properly, it is 6 types. We have 6 type of simple epithelium. Now let's talk about the compound epithelium. अब हम compound epithelium के बारे में बात करते हैं. We have classified compound epithelium की किस basically we have classified them into 2 category. हमें सिर्फ 2 ही category पढ़नी है compound epithelium की. Let me write it down for you guys. Compound epithelium में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 2 epithelium basically दिखाई देंगे. Those are stratified epithelium. I think it's too bright. Let me change the color of my marker.
Neon is too bright, right? So, hmm. So compound epithelium can be of stratified. हम बात करेंगे, डोंट वरी, सबके बारे में वन बाय वन बात करेंगे. एंड ट्रांजिशनल. द टू टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल. राइट. जब मैं अपने ग्रेजुएशन ईयर में थी, एंड वी हैव टू डू दिस, लाइक अब जब हो गए, आप अपनी एमबीबीएस कर रहे होगे, जब आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, मेडिकल में तो कोई भी कोर्स करो, तो होगा क्या बेटा, यू विल गेट स्लाइड्स. आपको स्पॉटिंग करनी होगी. आपका एक सब्जेक्ट होता है हिस्टोलॉजी, एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी. तो आप स्लाइड्स देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, यू विल बी सीइंग दिस स्लाइड. सो देयर इज अ गुड इंसिडेंट. जब मैं पढ़ती थी तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, आई कुड रिकॉग्नाइज ओनली ट्रांजिशनल एपिथेलियम. Pretty दिखते थे. They look very pretty under microscope. So I was able to recognize only transitional epithelium. Great. So now we have understood the simple epithelium and the compound epithelium. Now let's talk about these things one by one. अब इनके बारे में one by one पढ़ते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं simple squamous epithelium. Let's get started. Let's discuss about simple squamous epithelium. एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम से ही पता चल गया होगा अब तो, है ना, अब तो पहचान आ गई कि मैम ये सिंगल लेयर का बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है. यस, दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, दैट इज व्हाई द नेम इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. राइट. स्क्वामस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज इरेगुलर. सेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? इरेगुलर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. सो आई एम राइटिंग द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मैं यहाँ पर लिखती हुई जा रही हूँ आपके लिए कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर. सेल्स कैसे हैं? फ्लैटेंड सेल्स हैं. सेल्स आर फ्लैटेंड विद इरेगुलर बाउंड्री. विद इरेगुलर बाउंड्री, सेल्स की इरेगुलर बाउंड्रीज हैं. ग्रेट. ओके. सेल्स अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर आप उसका सरफेस व्यू देखोगे, लेट मी शो यू. राइट. अगर आप सेल्स का ऊपर से व्यू देखोगे तो आपको कुछ इस तरह के दिखाई देंगे. यस, द सेल्स विल अपीयर लाइक दिस, और ऐसा लगता है एक दूसरे से टाइटली वो है, फिटेड है. सेल्स लुक टाइटली फिटेड टू ईच अदर. इस तरह की अपीयरेंस को बोलते हैं बेटा, वी यूज्ड टू कॉल सच अपीयरेंस टाइल लाइक अपीयरेंस. आपने घर में टाइल्स देखी है, इसी तरह से कनेक्टेड होती है वो. तो इस तरह की अपीयरेंस की वजह से आप सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को क्या बोल देते हैं? कभी कभी वी यूज्ड टू कॉल इट एज कि भाई इसकी तो वो है, राइट, कैसी दिख रही है, टाइल्स लाइक अपीयरेंस है. तो हम इसीलिए कभी कभी से कैसा बोल देते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम बोल देते हैं. बिकॉज ऑफ द टाइल्स लाइक अपीयरेंस की वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं बेटा? वी यूज्ड टू कॉल इट एज पेवमेंट एपिथेलियम. हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम कह देते हैं. It is known as pavement epithelium. Great. ये सरफेस व्यू है बेटा. बाय द वे, दिस इज सरफेस व्यू. वर्टिकल व्यू कैसा दिखाई देगा? अगर आप इसका वर्टिकल व्यू देखोगे तो आपको कुछ सेल्स इस तरह से दिखाई देंगे. दिस इज द राइट. इस तरह से एक सेल दिखाई देगा. इरेगुलर बाउंड्रीज हैं. इस तरह से इरेगुलर बाउंड्रीज दिखाई दे रहे हैं. दिस इज द वर्टिकल व्यू. दिस इज द वर्टिकल व्यू ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. अच्छा, ये या सरफेस व्यू पे आपको ये तो चीज समझ में आ गई. दे आर पॉलीगोनल. अगर आप सरफेस व्यू देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देंगे? पॉलीगोनल दिखाई देंगे शेप में. न्यूक्लियाई ऑफ द सेल कैसा? फ्लैट है और लाई एट द सेंटर. न्यूक्लियाई कैसा है? इफ यू लुक, न्यूक्लियाई इज फ्लैट. न्यूक्लियाई इज फ्लैटेंड. Nuclei flattened and at center. Nuclei is flattened and it present at center. ठीक है. अच्छा, सेल्स जो है वो इरेगुलर है, काफी थिन है. अब कोई चीज जब थिन होती है तो आप सबको पता है वो किस में हेल्प करती है? इट हेल्प इन डिफ्यूजन. इसीलिए आप देखना स्क्वामस एपिथेलियम ज्यादातर कहाँ मिलता है? जहां पर डिफ्यूजन हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, या फिर फिल्ट्रेशन हो रहा हो. राइट. सो द मेन फंक्शन इज इट हेल्प इन एक्सचेंज. कहां पर? याद करो, एल्वलाई में मिलता है. दे आर फाउंड इन योर एल्वलाई. यस, दे हेल्प इन द एक्सचेंज इन एल्वलाई.
They are also found in for the filtration they are found in Bowman's capsule. दे आर फाउंड इन बोमन कैप्सूल. जब किडनी पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल से. आपको पता है ना बोमन कैप्सूल होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये उसमें भी मिलता है. यस, इट इज फाउंड, इट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन इन बोमन कैप्सूल. इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई. द सेम वे इट हेल्प इन, let me write it down, I have forget to write gases. Exchange of gases in alveoli. It also help in the exchange of material between blood capillary and tissue fluid. It help in exchange of material between blood capillaries and tissue fluid. Right? This is all about the squamous epithelium. But now a question arises, ma'am, where do we find it? Where do we find the squamous epithelium? The location. Let's talk about the location of squamous epithelium. Let's talk about the location of squamous epithelium. Let me change the color of my marker again. Right? This time let's make it blue again. So the location of squamous epithelium, according to your NCERT, it is found in the walls of blood vessels. It is found in air sacs, that is, it is found in alveoli. It is found in lymph vessels. Yes, it's found in your lymph duct. It is found in your lymph vessels. It is found in Bowman capsule. It is found in Bowman's capsule. It is also found in loop of Henle. It is also found in coelomic cavity. Coelomic cavity याद है आप सबको? We have a mesothelial lining of the coelom cavities में हमारी mesothelial lining होती है. वो करने का काम किसका? Squamous epithelium का है. Yes, this is all about the simple squamous epithelium. Let me repeat. It is single layered. Cells are flattened with irregular boundaries. अगर आप surface view देखोगे तो आपको cells polygonal दिखाई देंगे. They look like tiles. और इस tile like appearance की वजह से इसे pavement epithelium भी बोलते हैं. अगर आप इसका वर्टिकल व्यू देखेंगे, इफ यू लुक एट द वर्टिकल व्यू, आपको सेल्स इस तरह से इरेगुलर दिखाई देंगे. न्यूक्लिया या फ्लैटेंड एट सेंटर. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम? आपने देखा, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई, फिल्ट्रेशन इन बोमन कैप्सूल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू फ्लूइड. Location, it is found in the walls of blood vessels. It is found in alveoli. It is found in the Bowman's capsule. It is found in the loop of Henle as well as in the coelomic cavity. So beta, we are done with one epithelium. We are done with simple squamous epithelium. Now let's talk about the next epithelium, that is called cuboidal epithelium. Let's talk about the next epithelium, that is called simple cuboidal epithelium. As the name suggests, again beta, the word is simple. That means it is single layer. The cuboidal epithelium is a single layer here as well. So it also consists of single layer of cube-like cells. Cube-like cells, आप सबको पता है, the length, the width is equal. The cells are having same length, same width. This kind of cells are called cuboidal cells. हम इन्हें cuboidal cells बोलते हैं. The length and the width of the cell is same. They are cubical. Right? What about the nucleus? Nucleus is rounded and lie at the center. Nucleus कैसा होगा? Rounded होगा. Nuclei is rounded and at the center. It is present at the center of the cells. Great. So I have already discussed, they are cubical. Cells are cube-like cells. The length and the width is equal. ये cube जैसे दिखता है. Nuclei is rounded and at center. अब depending upon, बेटा ध्यान से सुनना, depending upon either the apical part of the cell is free or not. Apical part, recall your memory. आप सबने पढ़ा है ये कोई cell है,
तो सेल का जो पार्ट नीचे की तरफ होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जो होता है, उसको बोलते हैं बेसल पार्ट, और जो ऊपर की तरफ होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड अपाइकल पार्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ एपिथेलियम। आई एम टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। तो एपिकल पार्ट आपको क्या दिखाई देगा कि क्यूबॉइडल सेल्स का अपिकल पार्ट जो है कभी कभी फ्री होता है, कभी कभी फ्री नहीं होता। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, लेट्स टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। सो कभी कभी हमें क्या दिखाई देता है कि मान लो आई एम ड्राइंग द क्यूबॉइडल सेल्स वन मोर टाइम, लेट्स से दिस इज माय क्यूबॉइडल सेल्स। इन क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर हमें कभी कभी क्या दिखाई देती है, माइक्रोविलाई दिखाई देती है, राइट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती है, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। यस, sometime we can see the presence of microvilli over the cuboidal cells, cuboidal cells के ऊपर हमें माइक्रोविलाई दिखाई देती है। आपको याद रखना है बेटा, माइक्रोविलाई जो है, आप सबको पता भी है कि विलाई का काम क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो माइक्रोविलाई का काम भी सेम होगा, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। किस चीज के लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ज्यादातर केस में एब्जॉर्प्शन के लिए ही होता है। अब आपके लिए एक और लॉजिक बेटा, एक और जुगाड़। अगर किसी भी सेल में माइक्रोविलाई पड़ी हो फ्री सरफेस पे, इफ माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट एट अ फ्री सरफेस, वी स्टार्ट कॉलिंग इट एज ब्रश बॉर्डर्ड। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? वी बेसिकली यूज्ड टू कॉल इट एज, इट इज ब्रश बॉर्डर्ड। तो whenever you see the word brush bordered, आपको बहुत जगहों पे दिखाई देगा। जैसे आप पीसीटी पढ़ोगे, पीसीटी पता है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है पीसीटी, आप वहां पर पढ़ोगे पीसीटी कंसिस्ट ऑफ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप स्मॉल इंटेस्टाइन्स पढ़ोगे, वहां पर पढ़ोगे कि मैम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। सो कहीं पर भी वर्ड आ जाए ब्रश बॉर्डर्ड, इसका मतलब होता है कि उनके ऊपर माइक्रोविलाई है। The free surface consists of microvilli. So when I say कि simple cuboidal epithelium can be brush bordered, it means it has microvilli. And what is the function of microvilli? It increases the surface area. Most of the time for the absorption, it's not necessary for absorption, but yes, most of the time for absorption. Great. So what would you call a cuboidal epithelium with microvilli? What would you call? You will call it as brush border cuboidal epithelium. You will use the word brush bordered cuboidal epithelium. Yes, you're gonna call it as brush border cuboidal epithelium. Great. So now we are done with it. So now as usual, जैसे squamous पढ़ा था ऐसे ही पढ़ेंगे। अब तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा क्लियर, अब इसकी लोकेशन पढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन की कहाँ मिलता है। So if you look at the location of the cuboidal epithelium, it is basically found in the tubular part of nephrons. It is found in the tubular part of the nephron. To be very specific, it is found in the PCT. It is found in the PCT of nephron. PCT full form याद है आपको? Proximal convoluted tubule. Yes, it is found in the proximal convoluted tubule of nephron. It is also found in the ducts of glands. It is also found in thyroid glands. It is also found in ovaries and the testes. Yes, it is found in ovaries and testes. And that is why, because it is found in the ovaries and testes, बेटा ovaries और testes में मिलने की वजह से इसे germinal epithelium भी बोलते हैं. Yes, it is also known as germinal epithelium. Right? What is the main function? What is the main function of this epithelium? What is the main function of this epithelium? If I have to say, I will say the main function of this epithelium is to secretion and excretion. It help in reabsorption. In the form of brush border, it help in reabsorption. ये reabsorption में help करता है, secretion में help करता है. It also help in excretion. It also help in excretion. These are the major function of brush bordered. Sorry, these are the main function of simple cuboidal epithelium. I hope it is clear. I'm hoping it's clear to you. Now let's move to the next epithelium, that is called simple columnar epithelium. Let's move forward towards simple columnar epithelium.
कॉलमनार एपिथेलियम लुक लाइक अ पिलर. सेल्स जो हैं वो कैसे दिखाई देंगे? पिलर की तरह. टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं. सेल्स आर टॉल एंड स्लेंडर. लंबे, लंबे से, है ना, लंबे और पतले टाइप के दिखते हैं. दे आर टॉल एंड स्लेंडर सेल्स. अब तक आपने क्या पढ़ा था कि सबका न्यूक्लियस सेंटर की तरफ था. यहाँ देखो इनका सेल्स कैसे ऐसे तरह के दिखाई देंगे, पर इनका जो न्यूक्लियस है इट इज टुवर्ड्स द बेस. ये रे सेल्स आपको न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेस दिखाई देगा. ठीक है. न्यूक्लियाई इज इलोंगेटेड, लंबा सा, खिंचा सा, राइट. न्यूक्लियाई इज elongated and towards the base. It is towards the base. Right? And just like the modification we learned, हमने भी मॉडिफिकेशन पढ़ी थी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, उसी तरह से कॉलमनार में भी दिखाई देगी. मैं आपको मॉडिफिकेशंस बता देती हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है. मॉडिफिकेशन नंबर 1, कॉलमनार सेल के ऊपर सीलिया दिख सकते हैं. दीज आर आवर कॉलमनार सेल्स. इनके ऊपर सीलिया दिख सकते हैं. सीलिया के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, मैंने सिलिएटेड एपिथेलियम अलग से ही बना रखा है सेक्शन, वहां बात कर लेंगे. तो आपको कॉलमनार सेल्स के ऊपर क्या दिख सकता है बेटा? यू कैन सी दे कंसिस्ट ऑफ small microvilli. Yes, they can consist of small microvilli. If microvilli is present, ये microvilli है. आपको मैंने बताया था कि अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो किसी भी एपिथेलियम पे, हम उसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. Sometime columnar epithelium consists of microvilli. The one which consists of microvilli are known as brush bordered columnar epithelium. We used to call it as brush bordered columnar epithelium. And I think I don't you know the answer, right? Where do you find brush border columnar epithelium? Think about this one. Where do you find brush border columnar epithelium? Very good. It is found in the, yes, it is found in the mucosa of intestine. It is found in your small intestine. It is found in small intestine. Okay, great. Okay, what is the main function? What is the main function of columnar epithelium? I'm not discussing about ciliated epithelium here because I have made a complete different group for the ciliated epithelium. What is the function of the ciliated columnar epithelium? The function are they help in absorption. इनका function क्या है? Basically ये absorption में help करते हैं and secretion में help करते हैं. They help in absorption as well as secretion. Great. So this is all about location. अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए ciliated epithelium की, आप बोलोगे मैम it is found in stomach and intestine. Ciliated epithelium is found, if I have to say the location, I will say it is found in our stomach and intestines. It is found in stomach and intestines. So we are done with columnar epithelium. Now let's talk about the next one, that is called ciliated epithelium. यहीं पर अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट और पढ़ने वाले हैं, that is called ciliated epithelium. We gonna discuss about ciliated epithelium. Ciliated, right? Name is giving you clue that I have cilia, right? What is cilia? You might remember it's a hair-like outgrowth. It's a hair-like outgrowth mainly found on the apical part of a cell. What happen? The function of the cilia help in rhythmic motion. Yes, it creates a rhythmic motion. Because of that, it help in the transport of material which comes in contact with them. बेटा सीलिया जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है जो सेल के अपिकल पार्ट पे होते हैं, जिनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि मूवमेंट करानी है. किसकी? जो नियर बाय सब्सटेंस उनका है उसकी मूवमेंट करानी है. आई एम राइटिंग इट डाउन. सीलिया आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. Cilia are
I'm writing it down. Cilia are hair-like projections. They are hair-like projections found in the apical part, of cells. What is the function of cilia? The major function of the cilia is to create the rhythmic motion. With the help, it helps in the transport of the nutrient. The main function of the cilia is to remain in rhythmic, एक पोर्शन लाइक एक पर्टिकुलर मोशन क्रिएट कर रहा है बेटा ये. इट रिमेन इन अ रिदमिक मोशन एंड क्रिएट a current to transport material, right? It helps in the transport of the material. It always, please remember, it always move in a particular direction. अब depending upon कि cilia कहाँ मिल रहा है, depending upon which kind of cell is consisting of the cilia, it basically of two type, right? It is basically of two types. What are those two types? It consists of I have to be very specific. If it is present on columnar cells, see beta, this is my columnar cells. If it is present on columnar cells, what would you call it? Come on, you can answer it, right? I know you can answer it. This is ciliated columnar epithelium. Yes, this is known as ciliated columnar epithelium. Ciliated columnar epithelium is basically found in your fallopian tube. Yes, it is found on fallopian tube. Your fallopian tube, female's fallopian tubes consist of ciliated columnar epithelium. The respiratory tract, the major part of the respiratory tract also consists of ciliated columnar epithelium. After columnar epithelium, see bacha, this is my cube-like cells. Now you know the answer, right? So if I say the cuboidal epithelium consists of cilia, yes, cuboidal epithelium consists of cilia, what would you call it? You will say, let's name it as ciliated cuboidal epithelium. आप इसको क्या बोलोगे? You will say, ma'am, it is ciliated cuboidal epithelium. Where do you find it? It is found in the small bronchioles. It is found in the small bronchioles. So while telling you the types, I have also tell you the location of the ciliated columnar epithelium as well as ciliated cuboidal epithelium.